Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session, if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, 'cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, 'cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. 'Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know
what's up, pour that shit in my cup. We bout to turn up, crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out, in front of a whole crowd. We lose control now, I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me, everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better raise up a sack and tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up, it's time to break up with the life you made up. It's time to trade up, live the life you want. डाल दिया अनाउंसमेंट। People already left, so all right, we can start. Yep. Everyone can hear me, right? क्योंकि पिछली बार लोगों को आई गेस इशू हो रहा था। मुझे तो आ रहा। अगर किसी को नहीं आ रहा तो लिख दो भाई। तुमको पता कैसे चलेगा? नहीं आ रहा है, बंदे बोल चलो रहे हैं। that's good. बढ़िया आवाज है। Good to go, good to go, good to go. Yeah.
Okay, let's start with state businesses. Sorry, business. I'm still waking up, by the way, guys. So really sorry. Um, because we were getting a lot of tickets about businesses. So I'll explain how businesses will work. For every business, will have certain agreements. Okay. So whenever whole mayor meeting thing will start happening, you can come request for certain agreement before applying for any specific business, and then see if you are okay to work with it, and then you can apply for that certain business. I have certain points written up, so I will be reading it. Of course, I'll be happy to hear all the feedbacks. Like last time, you guys didn't like the fact that we had 6 month wala system. We decided to we decided not to do it for now. So whatever you feel like, please approach. So first major change is what we saw last time, which was getting abused a lot. Like from top management of their business, what they will do, they will make their own different characters and hire themselves in same company. Because some of the people we did give ban, so that does comes in character mixing. But right now we are making certain rules, and rules are for businesses. No one is allowed to use their multiple character in multiple business. If your first character uh, is doing business related role play, or it's working under someone's business, for example pizza this, always try to make your second character little different. For example, I have a cop character, and I have a mayor. Because they both are two different role play. Okay. That doesn't mean you can basically keep one character in pizza this and second in mechanic. Okay. It shouldn't be on business wala thing. Okay. As simple as that. We won't allow same group to apply for same, like any business. For example, if you are associated with certain group, so keep in mind, if you are associated with certain groups and that group decide, half of the people decide to go with certain business and half of the people decide to go with Y business. ठीक है? um, जिसका भी पहले business accept हो जाएगा, for example X का पहले हो गया, sadly that Y group won't be accepted with other businesses. You can help your friends to grow their business, so everyone can apply for certain businesses. Okay, we have very limited business in our city, and we want to make sure that everyone have same chance. Every business will have 49% of the stock, which will be open to acquire. This will help us to change the owner when the owner goes inactive. If you are the owner and your recent playtime is less than 2 days, uh, then change of the owner will happen. When the owner goes inactive, oh fuck, what I'm reading. If you're the owner and your recent playtime is less than 2 days, you do not, or you don't even come for any meetings, you don't meet your employees, okay, we will decide to remove you. Okay. All of the profit goes to the owner. So technically 49% owned by certain individual and 51% owned by state. That doesn't mean we will share the revenue. So if you own Pizza this, all the profit goes to you because all the work you are doing.
We are just keeping that 51%. So in our it makes sense when we decide to remove someone. Okay. But there are some exceptions. All the profit goes to the owner except real estate, arcade, and tuner. So we will have certain changes for real estate, tuner, and arcade. These businesses makes a lot of money, including PDM. So we have certain rules for those businesses. So it evens out, है ना? Because एक group like last time, अगर एक group किसी एक पे real estate आ गया, that group will start somehow वो friend to friend money flow होगा and they will lend other people money and कोई और वो business ले पाएगा और businesses के prices भी बहुत high चले जाते थे, right? I don't really want that कि 20 million का एक business जाए, ठीक है? Personally, I didn't like the fact कि there is someone sitting with 10 million and the other person have double the budget. Why? Because that other's friend holds certain business. Okay, that's not how investment actually works. Okay, I mean, क्योंकि हमने पिछली बार भी ये मना कर रखा था. That's why I didn't like the fact. Of course, we are working on more rules, so every business will have certain rules. You can always come. We will start doing mayor meetings soon. There will be an announcement. And when we will start doing mayor meetings, you can apply for other businesses. You can bring problems of the people ki haan, oh, people have so many issues, only harmony is in city, people need more mechanic shop, blah 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 blah, whatever your RP is. ठीक है? We are getting more FPSs for now. Me too, yeah. I'm looking into it though. Like certain FPS drop. I'm also getting the issues. I'm looking into it. Now, or some of the problem people were facing recently. हमने बहुत सारे changes किए. I mean, you have seen. There were a lot of people also had complaint of staff replying very late to their reports. I'm not talking about in-game reports. That though I cannot fix. But I'm talking about report forms, tickets in general. I think they have been increased massively. You are getting a reply very quickly compared to before. We are still working on other things and we'll try to improve our responses on in-game reports. There were some people who made a suggestion saying staff should not play. If they are staff, they should just do staff work. I can happily do that if you have certain capital and you start paying staff. No, there is no staff in on our server who get paid. It's not their IRL job. They are here to help the community. If you feel like you can help the community, you can fill the form. So, of course, they will play the game. So they can see what issues you are facing, because same issues they will face too, and they can take it to us and we can fix it. Our upper management जो है, okay, mostly the higher admins, they don't play server, they just manage it, so things are fair at your level. Okay, if you feel like a staff being biased, you can always reach out to us because we don't play, we don't have any friend group in server, you know, so we won't be biased and we take it very seriously. So I cannot ask every staff to stop playing in server, but of course I can tell them to stop playing for certain things. Okay, for example, gang role play, right? Because then it's not fun. I think that's my personal opinion, and that's why in our server
staff does not apply for any gang. No. Um, Recently there was increased. People were reporting for PDM a lot. People were getting PDM'd a lot recently. And these VDM used to happen on public places, for example, bazaar, um, pillbox, take it. And I even personally think if people intentionally, even if they see that the person is dead, they intentionally leave them, and then they lie to staff. Oh, I don't have POV, and it was not my intention. It didn't happen in my eyes. So we have decided to make a rule which will be announcing that all the oh sorry, it won't be a rule. I'm just gonna announce it here because technically it's common sense in role play that certain place is crowded. You will drive little slower from if you're passing that place, okay? So you don't hit anybody. If you're driving very fast close to any crowded places and you hit anyone, doesn't matter, it happens in front of your eye or it's a bug or whatever, you are getting banned. So drive slower those certain places. And there are only two. One is bazaar and second is pillbox. So just avoid it. Even in chase, avoid it. Don't go there. There are other places, right? So अगर आप वो दोनों जगह नहीं जाओगे, you won't hit anyone. Correct? So yeah. Now, false report. Recently, we have seen a lot of people making false report. One of the first is speaking in game. By the way, before you saw that whenever you used to die, you were not able to use your mic. Okay, your mic will automatically switch to mute. But we decided to turn it on for now. When we will start gang role play, it will go on mute again. And a lot of people started making report. Oh, he is dead, but he's still using mic. And I saw some people were actually role playing where they will act injured. They will ask for help, which is okay. That comes under role play. If you are sticking to your character, how your character is feeling, and you act like injured, there is no issue. You can talk. So stop making reports on those people. Second, some people who try to help people, take care, for example, they ran over someone mistakenly and they decide to help that person. Now, what people will do, oh, मेरे को उड़ा दिया जानबूझ के, now the person is taking me to pillbox. What do you mean? What do you think? What he gonna do? Don't expect anything and don't make that report. Okay, that doesn't make sense. So these two reports, please don't do that. We will be introducing a channel. This was suggested on suggestion form, I guess, where you asked us that there should be a channel where we can take appointment from PD and EMS like we have for DOJ. And I think I can make it little more better with the bot, where the bot will assign an officer for you. And whenever that officer goes online, you get a tag in the channel that that officer is online on duty and you can reach out to them. Okay? So you will know if the officer is online. Okay? And same goes with DOJ, same goes with the EMS. I think that's the best way to deal with the appointment wala system. I still agree कि हाँ कभी आप नहीं होते कभी वो नहीं होता है and it's good अगर दोनों को notification जाए कि oh that civilian is online in server, so if you wanna go help them and clear your case, you can do that. So we will be making a bot soon,
and there will be a separate channel for it where you can take appointments. Now, there are some things related gang. Let me read it for you. Okay, there were some suggestions from people जो मैंने forms से पढ़े थे, and there are some things what we think should happen. Okay. Of course, बहुत लोगों ने चलो chat में पढ़ा होगा. The minimum play time should be 14 days. And that includes your PD and crim character. But still, your crim character should have at least 7 day का play time. Otherwise, you cannot do gang role play. Okay. Few names जो अभी हम announce कर रहे हैं. There will be total 8 slots. ठीक है. I have 7 names. Balas, JSF, Bloods, MG, TLMC, OGs. Fallen/Saints. Either keep Fallen or Saints. ठीक है. These are the names for now. As you have seen, we have a playtime limitation on Gunrun. Before also we had. And of course, when Gunrun will start, we will introduce it first from South side, and we will let other people know, like gangs. And gangs say it will go to civilian, and everyone can do it, right? Now, there is a thing you have to understand is mostly gangs. Last time what we saw, people have only 2 day ka playtime, and some of the member what they will do, they will go do gun run. And SCM के to वो सिर्फ उस बंदे को इसलिए दे देंगे so that that person can participate in war. ठीक है? Even civilian war. If you will do that, there's a high possibility you will lose all of your weapon. Recently, अगर recently किसी का pocket wipe होगा, we did make a bot which does that for us, where we can just wipe weapons. Okay? Not BR weapon, actual weapons. So please don't do that. One important rule, one important suggestion for gangs so you can be whitelisted as soon as possible. We expect a gang member to follow all the rules, their character. Take it. So whenever you are, whenever I'm coming, okay, I have to close chat, so stop reading it. So whenever you are role playing as a gang, stick to your character. Okay. A lot of people break character in between. For example, they will start teaching them rules. If we got even a single complaint about this, I think we expect some extra effort from gang, right? And we do give you guys extra perks, so you might lose access of it. One more thing is taking anyone granny. If you decide to take anyone to granny, there should be a reason. Okay, if you are taking them for no reason and asking dumb question there, if you get reported, you will be banned. So don't do that. Minimum member active 10. Leaders have to give interview to admins
ठीक है, and once they qualify, they will take leaders will take interview of their members. That videos will be posted like before. It was like before this vibe. We had this rule. We decided to bring it back. I think it helps us. We are also introducing something called gang task. So every gang will be assigned a job and a time period every month. So the time period will be a month, and they have to basically work on it. If they fail to do that, whitelisted role will be removed. And one big thing is gang should always wear masks. So if you're a part of a gang, wear your mask. Doesn't matter you're in a civilian situation or whatever, wear your mask. From now onwards, if you're hunting 5v5, if you have a planned ये क्या कहते हैं gang war, you can do 6v6 or 5v5 up to you. ठीक है? But for hunts, only 5v5. All right. There are some rules which we announced recently. ठीक है? Uh, for gangs. So I'm gonna read it for you guys. So you know. So for because you will start making gangs, okay, and you will start troubling others, okay. Others mean other gangs. So many gang have been refusing to agree on war or hunt timing because people do that. To address this, there is a universal time slot which has been 7:30 p.m. to 1:11 p.m. Sorry, 7:30 p.m. to 11 p.m. All gangs are required to be available during this window if there is a hunt on you. Okay? And if any of the party fails to show up in these time period, technically the other person wins. Okay? If they win 3 times, they technically won the situation. Okay? But still you will get one chance where a staff will decide a time period for you where a war will happen, and whoever's wins the situation. But if, for example, X gang was there and Y gang was there was a hunt. Y gang never showed up. X gang won. Staff decided next day, okay, there will be a war, but X lost, Y won. Then X will get another chance to redeem themselves, and then they can go again if they want to. Why? Because they were showing up every day when the hunt was happening. So keep that in mind. So this was the rule which was announced recently. Uh, I think all gang related stuff is done. I will be reading some questions in chat. If you have any कोई questions for पूछ रहा me, था कि please let me know. DLMC एंड सोल वाले जो बिजनेस उनको जाएंगे क्या गैंग को Hmm. ऑब्वियस If you डिस्कॉर्ड तुम have, फॉलो करते हो ना ब्रदर if you have in your, so last time there was a guy who came for a civil, but उसके बैक स्टोरी में लिखा हुआ था कि वो जाट है एंड ये सारी चीजें. If you are following a certain storyline, I don't mind giving you the business for free of cost, to be honest. We only charge 100K, which is very cheap compared to a million, है ना, क्योंकि और सारे business के लिए they pay $1 million. So if you're making certain character, you're following certain storyline, I don't mind giving you uh, the business. ठीक है? You're roaming around on a bike. If the backstory is perfect for Soul, then what about it? Yeah, you can. You can have the gang business. Yeah. बट ये है कि मोटरसाइकिल चलाओ Yeah. Like it's not like कि तुम्हें 24/7 मोटरसाइकिल चलाना है, but
majority of time use motorcycle, be a motorcycle club, what you are claiming of rather than driving car. है ना? PRS ले सकते हैं as well, yes ले सकते हैं. That's what I said. अभी स्टार्ट नहीं हुआ है गैंग रोल पे. By the way, I forgot to mention, it will start soon, and you will know. ठीक है? We'll make an announcement that gang forms are open, and you can start doing that role play. अभी no. Food prices कम कर दो. They are not that much, brother. Bike पे robbery, I don't think so. Bike is just not no fun. पीडीएम व्हीकल्स का फाइन ट्यून करके ही प्राइस डाला है, कम नहीं होगा ब्रदर. I see some people doing illegal stuff like weed and so on. First, there is something called RP progression. Okay, whenever you do this garbage, you get weed seed, you get weed birds, you know, from, or if you rob a house, you get certain things. That what is progression, right? For shrooms also, there are some people what we saw that they were doing progression. If you do progression RP, we have no issue of you selling those drugs. पीडीएम प्राइसेस कम होंगे, कम हो रहे हैं. यस. डेली टास्क वाला कमांड डाल दो फिर से. नो, आई थिंक इट्स गुड. I need question related gangs, guys. Come on. And then I can proceed to next section. I have SISP section also, so I can start reading that. Bank robbery when? Soon. You will see. People will start doing. Then you can start. उड़ते उड़ते खबर आ जाएगी. Oh, I forgot to tell. Yeah, I forgot to mention this. When we fill a form for house auction, there is a section of maximum bid amount. If we are mentioning that maximum amount, then the company may ask someone for fake bidding to grab the maximum amount for the house. Better to not mention the maximum amount in form instead of bid. Should be fair on spot. No, no, no. So all the bidding will only will be conducted by state. Okay. Whenever you mention max amount, okay, we tell our people to grab that money from them. So, for example, there are 4 people, okay, A, B, C, D. D mentioned that I have 10 million. So, a state employee will contact him and ask him to deposit that money to him. So, if the amount goes up and he wins, okay, he actually takes it rather than saying no, अब मुझे नहीं लेना है, जो कि पहले हो रहा था, and people were asking their friends to do fake bidding. So yeah, don't worry about it. I saw a lot of people were asking ki why Winewood store is closed. People were only hitting that store. So if you spam anything, we will just close it. Okay? So maybe just don't spam it. Okay, I don't Can we think so. have new A phone? lot of people have. डेवलपमेंट चीज है I don't brother. think so. Gang related question anyone have. I can move to another section, which is SSP. A lot of people had complained about behavior, SSP behavior. ठीक है?
few things I want to mention. If you are a criminal, some cop will say certain words which you won't like, okay? But you know, for example, I have seen recently, people break. I'm talking about in role play, okay? They break certain rules, and a cop get little aggressive, tell them to pull over, and उनकी ego hurt हो जाती है in RP, ठीक है? I'm really sorry, we cannot do anything about it. It's just role play, ठीक है? If you try to approach certain police officer and they are being aggressive at that time, then it makes sense. You can make a report. But if you are the one who is criminal, of course, no one will talk to you nicely. You have to understand that. You try to kill an officer, you are shooting him, okay? So, of course, they won't be nice to you. So, don't do that, okay? That's one thing. Apart from this, अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है कोई पुलिस वाला, you can always make a report. है ना? We have a SSP report or in game, and yeah. But there was one more suggestion: shift hiring. So morning maybe police वाले हो. It's a nice idea. We had that before, but people lie to get accepted. For example, they will lie कि हाँ हम morning में आएंगे and morning में ज़्यादा लोग आते नहीं, so we'll be little lenient to them. हम लोग उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे and they will request, sir please 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 हमें शाम के स्लॉट में डाल दो, अब मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरे एग्जाम है and other stuff. But we'll see what we can do about this. It's a very nice suggestion and we will try to do something about it. A lot of people had issue that why other jobs are getting wiped but not PD and EMS. Example, PDM. So PDM got wiped, and if I want to hire someone in PDM, it takes me 3 days. Okay? But if I want to hire someone in SSP, it takes months. Okay? Because there is a credit phase and other stuff. A lot of people don't show up. There are so many things. Okay? When it comes to SSP, when you will apply for SSP, you will know. Okay? It's very complicated. And yeah, that's the reason why it was not wiped. ठीक है? All right. A lot of people had complaints कि cops सिर्फ chase करते हैं, respond करते हैं 1090 पे, and they don't work on reports. We have introduced new MDT, and we are adding a lot of new things where you're able to make reports directly. We're still working on it, and soon you will see cops will start taking your reports seriously because we'll be adding certain things where if they want to be promoted, they have to complete certain reports. Okay? So don't worry, your reports will be taken care soon, very seriously. ताकि आपको ज़्यादा wait ना करना पड़े. Okay? We are working on that. We also want it. Harman said admin access वालों को decision making सिखाओ. पता लगता नहीं इन्हें किसे बैन करना चाहिए, किसे नहीं, रिपोर्ट करने वाले को बैन दे रहे हैं अपनी ईगो में. Okay, I think I know what Herman is talking about. So according to Herman, whenever you make a report, QV is not compulsory. So he made a report where someone killed him for not doing role play. Okay, so he was wrong side, and intensely he pitted someone's vehicle very heavily in speed. Okay, he decided not to talk to him because he was trying to take a train from train station to Palito, where you press E and log yourself out and take spawn at Palito. You know what I mean? I think he was doing a task.
तो basically इन्होंने पिट किया, and then that person told him to stop. So he didn't stop because he was in hurry, क्योंकि वो task complete करना था. तो seconds में you have to reach Polito. And and then when he reached there, that person shot him, and he made a report that he was RDM'd. When staff contacted him back and asked him, "Were you recording?" That was a very normal question. Herman replies, "What's the point of filing a report, if you will ask for POV?" Brother, how we will know who is right and wrong? So the first report was made by the person who was driving the other car, जिनको इन्होंने पिट किया था. Then we decided कि okay, according to Herman, we don't need POV and we can just take action normally. We decided to ban him because he reported after him. Technically, he was right because according to Herman, you don't need POV. And when he got banned, he said, no, decision making. That was the reason. And that's the solution we had for you technically. You have to understand, when you make a report and staff sees it, it's already too late. You are already dead. Situation is already over. We don't know what happened. You recording your POV helps us to help you. Okay? Whenever you submit your POV, it's gonna help us to decide who was correct, who was not. You know? And if you're not gonna do that, how we will take certain decisions. You know? Logs are limited. लॉक्स में आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आती, लॉक्स में ये नहीं पता चलता कि हाँ आप क्या कर रहे थे. ठीक है, आपने उसको गाली दी कि उसने आपको, एंड किसने किसको प्रवोक किया. तो यू हैव टू रिकॉर्ड योर पीओवी. इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू वांट कि फेयर डिसीजन लिया जाए, प्लीज रिकॉर्ड. अदरवाइज विल आस्क अदर पार्टी. इफ द अदर पार्टी डजंट हैव पीओवी, विल वार्न बोथ ऑफ देम कि डोंट डू इट and we'll move on, right? That's how it is. That's how it works, sadly. Okay. I think cops के इतने ही points थे. We are working on those points too. Now, staff related suggestion. I saw, I think four people who basically mentioned that we are biased towards supporters. I don't know. A lot of people make complaints about I'm not high, I am not well. Okay, and that's why I sounds like this. I need to go back to bed. I wanted to postpone this meeting, but if I would have, then you all will say, "Oh, this guy is just wasting our time." So I'm just gonna complete this meeting as soon as possible. Okay. So bias towards supporters. A lot of people forget about the fact that people who buy Prio is technically paying the server bill, and it's a free to play server. You can join anytime. And we have only certain perks for supporters where you can make tickets rather than contacting LHS. We have a ticket where you can contact us, okay, and make certain reports, and we'll try to solve those reports before anyone else. Why? Because you are paying the server bills. Okay, you are keeping server online. If you have issues with it, I don't know what to do, brother. Like, because I have to give certain perks to them, so they feel like renewing their uh, tickets every month, so you can play for free. So I don't know where we are doing something wrong. And a lot of people make suggestions saying, "Oh, you are biased," but you have to mention a situation how we are biased. People make statement without facts, present facts, and we'll see what we can do about it. Okay, thank you. Um, we don't sell and ban. We don't sell ban. We just offer a ticket system. Okay, I think that's it. Wait, no, we do have more.
Yeah. Um. No, I think we are done. Yeah, we are done. No, we are not done. I have points more. My bad. So this was the comment from someone: when staff member is in server, there should be they should be available in game. Oh, I already covered this. Oh, there was a suggestion for playtime shop. So if someone is spending a lot of time in server, there should be a way they can redeem their playtime to get something, in game. I like the idea. I will do something about it. Um, Normal toxicity is allowed, but you can say normal stuff. ठीक है? Just extreme नहीं होना है. And extreme में माँ बहन की गालियां नहीं देनी. That's it. ठीक है? And it's for everyone, even for gang. I think that's all, guys. If you have any other question, I will be answering it. Community meeting में आप write कर दो. I will do it for 5 more minutes and then I'll go take rest because I'm not well, guys. I'm really sorry. ऐश ने पूछा है गाड़ियों के Yeah. एंड फूड के प्राइसेस ज़्यादा है एंड ग्राइंडिंग इतना प्राइस नहीं आता है सर। Sorry. Come again. गाड़ी Prices ज़्यादा हैं. ज़्यादा है एंड ग्राइंडिंग से इतना प्राइस नहीं आता, हार्डकोर ग्राइंडर होना तभी आता है ऐसा करके कम करना What you talking प्राइसेस। about, bro? There are people who have 600K. People who had 600K in 4 days. If you know how to grind, you can. Illegal activity कब शुरू होगी? हो गई है ब्रो, थोड़ी थोड़ी, मतलब लिमिटेड लेवल पे. No. '18 plus age limit must be there. That's not my job. I'm not their parent. This game is 18 plus in India, by the way. So if you're playing this game, you should be 18 plus. Right? Taco on kar do soon. When taco will start happening, that means gang roleplay you can start, by the way. Can main GTA gang switch their custom gang hood if they want a chance from the main hood? Matlab, no, I guess. Staff has a huge responsibility and they should be non-biased. And if possible, 2.0 ticket jaldi dekh lo. They are non-biased. If you think they are biased, there is a form called staff report. You can always fill it. प्रॉपर्टीज एंड कार्स लाना पीडीएम ओपन है ब्रदर एंड प्रॉपर्टीज का शुरू हो चुका है। I feel like service economy is all over the place. The job don't pay enough if you consider all the prices in city. For example, PDM cars are usually stuff in the city. It does not make sense for the price we see in the server unless you are a grinder grinding in a server like 6 to 7 hours per day. Are you thinking to fix it? What do you mean by that, bro? वही तो बोला था ना मैंने अभी, प्राइसेस ज़्यादा है उसी का है। What do you mean? It doesn't make sense. You can have 10 cars in 7 days, right? Boosting or illegal task ETA soon. RMT allow kar do. No. RMT related I had to. So I'm gonna read. Wait, give me a second. So as you guys know, we have a system where if you wanna give loan to someone, you have to fill a form.
Before we had 50K, now we have 10K. There was a guy who had an issue that I accepted his form 2 days late. I reached out to the guy asking apologies. I accepted your form 2 days late. If you can tell me what issues you had so I can make it up. Okay. And the guy said, nothing crazy happened. Just a thing was he had very less time left in his prior expiry. He asked me to borrow, but thanks to the loan system, he ended up grinding all day and got his vehicle. I know you will not feel like changing or removing this loan thing. After I say things, say this is a shit. Truly, I'm not speaking against any staff, but the decision of introducing this loan system was not a great idea. Rather, you could announce it that give a big amount to someone. You should inform staff available. We had that, and there was a lot of loopholes. And that's why we decided to reduce the amount from 50K to 10K. So we can keep an eye on those. So my reply was, he had a big message. My reply was the reason this was introduced because some people were bribing others to give them in-game money in exchange of real life money. This is called RMT, and it's very hard to catch those people if there is no limit on amount. Earlier, you don't even need to fill any form if you give money and if the amount was under 50K. But what happened, people started doing transaction in phases. The staff is limited and they cannot just sit around and monitor every single transaction, ensuring ki RMT doesn't happen. A lot of people don't understand like how RMT can affect us. For example, there was someone complaining about it's very hard to get cars. When you put a lot of time, effort to get certain cars, you have to think there is a guy who is getting that car just by doing nothing for just 500 rupee, right? Because there are some people who are just selling their in-game money for nothing. Okay? We stop those things so your effort are same compared to others. Okay? Now a lot of people will complain, oh, you also sell cars. We do, but the prices are very high. So it it does make sense ki, oh, that guy did like a 1 week grind to get that certain car, for example 300K car, and the other person who bought it paid that lump sum amount for it, okay, which is high. It's not cheap, okay. So we are balancing out. So this happens. We are quick to accept these forms. We try, but sometimes it does happens कि हाँ ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है. But if there is any delay from our side, and I'm mentioning this, if there is any delay from our side, and if your ticket is about to expire or something happens, you can always reach out to us, and we will add extra hour days in your tickets, so you can get those things. Okay, the loan system was introduced by us. What all I can do is give you extra time to buy your certain vehicles. Okay, so you don't lose it. Now, if now other people will say कि sometimes auction happens, ठीक है, auction announce एक हफ्ते पहले होता है, so you do have enough time to apply for form, ठीक है, and the maximum time it takes to accept like 2 days, like 48 hours में form accept हो जाता है mostly, ठीक है. So if there is any delay from our side, you can always reach out to me in 2.0. Oh, delay happened, can I get extra days or extra hour or extra, and जो भी कुछ होगा we can figure it out. ठीक है, that also I also do it with tickets also. Sometimes people open ticket very early कि we wanna buy a certain ticket, and मैं थोड़ा late हो जाता हूँ ticket deliver करने में, so तब तक shuffle आ जाता है. So I ask them, I tell them कि you can still get cars from previous shuffle. Just let me know if you have the money or not and other stuff. And if you qualify, you can get it. I don't have issue. Okay.
रवि गैंग के रिलेटेड और कंफ्यूजन है लोगों को, हम्म, लाइक कस्टम गैंग गैंग नेम अलाउड वाला। रहेगी या नहीं, और अभी जो गैंग सेड एरिया। फॉलन, मैंने फॉलन नाम लिया। गैंग नेम्स जो अलाउड रहेंगे, अभी मैंने जस्ट नाम लिया है फॉलन, सो या if you are bringing any custom name, please reach out to us, get confirmation can we use this name or not. If we allow, then you can. 2.2 SSP suggestion: after every situation ends, all officers that were involved in that situation must stay at PD for 10 or 15 minutes for regarding the civilian reports, if any. When doing so, they must go undercover so that no bank or store get hit. I don't think so. There are a lot of people who actually sometimes like they are waiting for 2 days and उनका बैंक नहीं टेक होगा. Everyone wanna experience same thing what other people are experiencing. Like cannot force PD. No, ये 15 minute you have to stand here. Every officer. एंड वो पूरी सिटी में और किसी जगह पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी और कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कोई कोई किसी को हॉस्टल ले रहा है, कोई किसी की कार लूट रहा है, एंड देयर जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर. आई कैन नॉट डू दैट. आई एम रियली सॉरी. I think people PD. So we have something called match of force. If you have a automatic weapon, they will use an automatic weapon. If you have a pistol, they will use a pistol. So I don't know what was the अरे issue. वो भी क्लियर आउट कर दो एक बार एसएसपी के एंड से कि लाइक पब्लिक प्लेसेस कौन सी है जहाँ पे वो कोड रेड कर ले, लाइक दो सिविलियंस फाइट कर रहे हैं and वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो चीज़ भी क्लियर क्या आउट क्या? करनी दोनों. लाइक दो सिविलियंस फाइट कर रहे हैं and एसएसपी कैन इंटरफेयर और नॉट. Oh, they can. If two civilians कि are fighting anywhere in the city, they can interfere. Limit of selling gems. No. People are abusing for small. You can make a report file. We have banned a lot of people for this, and they're changing now. So should be good. EDM car prices कम कर दो. They are less. अरिजीत, they are less. EDM car prices. हाँ, दोनों दोनों इस सेम लेवल पे होंगे ना. If someone being toxic, you cannot be toxic. No. ठीक है. I think we are done. What about the gang compound in Palito, Sandy, and the city? Since multiple gang already have compound, it should be good to clarify how gang can acquire them. Also, mentioning biker gang more broadly. Yeah, soon. Boosting illegal tasks soon. Uh, EDM car speed and armor. I am changing a lot of things. So you will see. By the way, we have something called vehicle handling. There is a command you when you press T/vehicle handling, and you can search for any vehicle and check if that vehicle is better than other vehicle or not. Okay, and you can make certain suggestion. By the way, just letting you know, so you can compare all the values. I think we are good. Properties and car law. Properties आ गई हैं. ठीक है, you can apply for certain houses. Cars आ गई हैं. PDM is there almost. ठीक है, we are just hiding. थोड़ा मेरी तरफ से भी डिले है. I still have certain cars जिनके prices थोड़े edit कर रहे हैं. Otherwise everything is good. Soon you will able to buy all of them. ठीक है. Ayan lost all of his money in casino. मेरे भाई को उसके पैसे वापस दे दो. He is a good man at heart. And Gambling is bad, brother. that Asian keeps stealing our money. And that Asian keep stealing
our money. First of all, that's racist. Second, gambling is not good, and there are people who are making money. There is a guy who made $1 million. Okay, so maybe go rob that guy. I think we are good. एक बंदा बोल रहा है कि जिन्होंने पहले 600 700 के बना के रखे हैं, तब ये लॉग सेलिंग पे कोई लिमिट नहीं थी, इसकी वजह से वो बना पाए, लेकिन अब लिमिट है 25K पर डे की, इसलिए अभी नहीं बना पा रहे वो। ग्राइंडिंग बहुत हार्ड हो गई है। Autobot, do you know that guy was sleeping for 6 hours only? I checked his logs. And still you can do that, but you just have to do other jobs. And yeah, limit should be there. पहले से ही limit होना चाहिए था. You know, sad life. You were not able to do it. He did. And you can Gang still compounds can do impose, right? bus. By the way, bus doesn't have any limit, and it gives more money if you know how to drive properly. Yeah, if you want to do gang, you have to open a 2.0 ticket. The leader only have to open a 2.0 ticket and then proceed with it. Yes. We have a channel called Gang RP. वहाँ पे you can read a lot of things. वहाँ पे बहुत सारी चीजें mention. I think we are done. यार मेरी भी English weak ही है. I'm just trying to help myself. लास्ट मीटिंग में बोला था स्टार्टिंग में फूड प्राइसेस कम रहेंगे, देन 2x हाइक इन पिज्जा प्राइस फ्रॉम लास्ट सेशन. स्टोर भी बढ़ा दिया है. व्हाई? So people make money and they put their time. They उनको लगे कि it's worth putting their time at pizza place. And people are making good money. And a lot of people are complaining कि oh prices वहाँ पे up हैं. Oh pizza be on your right. That's not my job, right? Like if you think there is a gap, you can fill it. You can be that pizza guy who can deliver and make good money. People making good money by just selling pizza. I forgot the guy name who had 500K just by selling pizza. Yeah, I think we're done. Thank you guys. I'm really sorry. Global API is up or no? नो I आइडिया, मैं don't तो think so. सर्वर में हूँ। नहीं है, नो नो नो। नहीं है नहीं है। Mm, okay, जब तक global API up नहीं आया, I can take more tickets, more stuff. PD ramming, more while code red. If you don't want to get rammed, don't ram. अगर आप ram नहीं करोगे, PD will not. I know global API is down. पहले रंपो 5,000 की थी, अब 15,000 की है. पहले रंपो में 500 स्टोरेज था, अब 750 है. एलेक्स. पहले का रंपो का प्रेजेंस नहीं बनता था. In vehicle handling section, it is mentioned that PDM vehicle is same as EDM. No, EDM vehicles are little better compared to PDM. LSD allowed, shrooms allowed, moonshine. I don't know how you figure out, but if you have certain role player, narcos, no.
when we can apply for previous imported car from first. 26 lakh is less for car. 2000 का GTA 5 में तुम 6000 की GTR देते हो, पैसे भी महंगे कर दिए. It's not 6,000 first of all. It's 4,500. So you can open a ticket and buy it. Okay? Introduce warning system instead of banning directly for 3 days, even for basic mistakes. We do have that. We do warn people. A lot of people, जब भी आप join करते हो server में, you get a pop-up every fucking time whenever you join the server. We do have that, and but sometimes I know we also make mistake. हमें कुछ कुछ situation में ban नहीं देना चाहिए और हम ban दे देते हैं. Really sorry for that. You think if आपको warning मिलना चाहिए था and you got a ban, you can always open 2.0 ticket and we can see. I think we are done, guys, right? State business, every business will have an agreement. You can come to a mayor office and request an agreement, accept for good terms. I already said. Hmm. Even I was reconnecting, some goons took away all my gems vehicle in Harmony. Is it valid roleplay? No, you can report them and get yourself back. We will refund yourself, okay? अगर सिर्फ एक दो चीजें चोरी हो तो मत किया करो यार रिपोर्ट, ठीक है? इट्स टू मच फॉर. अगर तुम्हारा ज्यादा सामान हो जाता है देन प्लीज कर दो. आई मीन रिपोर्ट कर दो, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट कि रिफंड मिलेगा, ठीक है? सो वी कैन बैन दोस पीपल सो दे डोंट, they stop doing it. But like I will send you in Hindi, don't worry. Adding limit was never a bad idea, but the job need to pay more, especially when everything is expensive to buy. We just went through a wipe. EDM prices replicates international pricing, but international never wipes. This is leading to people just grinding more, are paying less, unlimitedly. It's leading. Okay, just before wipe, everyone had everything. So I don't know what you're talking about. Why you wanna speed up? Why you wanna get everything? Take small step. If you think, um, you know, I mean, I'm not talking to you, but there are some people who will think, okay, I will buy a ticket for a month and then मैं सारी गाड़ियाँ खरीद लूंगा. That's not how it works, right? There should be like everything have a system, and food got expensive. Cars should be expensive. Not everyone should have 400 cars, right? Streaka, I already told you last meeting, we will introduce something where you can, a streak will hold more value. Okay? So you'll know about it. Scamming should be allowed. Scamming is allowed. You can scam gang members. Okay? Normal civilians not allowed. Do it to gang. Okay? But don't complain what they will do to you then. Having election in city, I'm just gonna win. Better not to waste time of other people.
PD was a gang 4v8. I think now we are getting more people. I might allow gang versus PD 5 to 10. 5v10. We'll see. I think 5 people are more manageable. नए कपड़े ऐड करो, शूटर वाले कपड़े बनाने हैं मेरे दोस्त को. We do have new clothes. We are working on new clothes. Extra. People are forgetting that there are illegal stuff too, and it's coming. Then you can keep growing stuff, you know, and start making money. Yeah, you can. About cop using aggressive language to criminals, I get that. It's RP. What about criminals replying and matching the tone? That's not the issue. That what happens all the time. They do +1 always. Staff को allow कर दो gang RP के लिए. No. What about Oxy? पहले IntelliGTB 250 की थी, अब 1.2 million. Bro, I just said I have to edit certain vehicles prices. I am doing that. सुपर And एंड वो धीरे स्पोर्ट्स धीरे कार के वापस प्राइसेस मत देखो ब्रदर्स, अभी तक एडिट नहीं हुआ है. हाँ, अभी बहुत सारी चीजों के प्राइसेस एडिट नहीं हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेलिंग देम. दैट्स ऑल. एक बार मेरा एडिट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इटैलिक जीटीबी 250 की नहीं होगी बिकॉज इट्स अ बेटर कार. इट विल बी अराउंड 300K, जहां तक मेरे को लगता है, बट इट वोंट बी 1.2 मिलियन. रिलैक्स. आई एम वर्किंग ऑन इट गाइस. सुसु और टट्टी करने ब्रो मुझे जाना है. Can you change the capacity of truck because it doesn't make any sense smaller? Give me 100 discount code for buying prior. I can. If you are buying 100 prior, I will give you discount. The new car that are added to PDM like Fancy GT SFM J Mark V, will they be removed later and blacklisted them and stuff? Yeah. What about having election? Bro, I already said I'm just gonna win. So basically, what I wanted to suggest now, ATP grinding is harder. Reason being, certain jobs are enough. So I calculated based on new grinding method, people who play daily was on average able to earn 40 to 50K. Before we used to earn more than this. And this is why everyone is behind PDM car changes. Also, so it's happening. Like if you think Italian GDP will cost 1.2 million, no, they will not. Just relax. Per server profile, yeah. I will be reducing price for PDM cars, guys. Bro, हाँ if you रफी are typing any message in caps lock fully, it's very hard to read. Please don't do that. बंदे गैंग कंपाउंड्स के पूछ रहे हैं.
EDM cars are mostly all nerfed. No, they're not. That's why we have slash vehicle handling. You can check. And we are working on improving them. I improved GTR. I improved. There was one car recently. That one too. First bullet accuracy वापस no. Scamming no. It's just low effort RP. Scamming is just low effort. You can scam, gang people. Illegal race there are. About racing, yes, I had to make an announcement. There are a lot of people who does a lot of races. You can reach out to me. I will give you access of a server where you can go and make uh tracks very easily. ठीक है? And तुम्हारे checkpoints actually visible होंगे. You know, because जब आप map पे select करते हो, checkpoints visible नहीं होते हैं. You can get access of it. Of that server, it's done. कल रात को बैठ के मैंने डन किया है वो. सो यूल सी जब भी मैं ट्रैक्स बनाता हूँ सारे ट्रैक्स विजिबल होते हैं जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं जमीन के अंदर कुछ नहीं होता है ठीक है सो यू कैन यूज दैट टू मेक मोर न्यू ट्रैक्स एंड या ठीक है forgot to announce it what about boosting soon I think we are done guys running to the current godlike prices which is 7,000 don't you think we should be able to import at least 2 cars bro you already get 3 free um custom number plates which is 1,200 each I think we're good old recoil it's good right now recoil is good brother tuner open when someone will acquire it first bullet or old recoil सब क्रॉस करो इसको phasing should be enabled we are working on new racing script I hope it should be there soon and then we can add more custom clothes we are working on that too current recoil and ooh, either make a pool to ask everyone is it what's the issue with the current recoil अभी तो AR आई भी नहीं है यार it's just pistol I think weekly taxes can be removed I don't think so it's just 0.9% until you have so much money we are adding new cars yes PDM AMI system is already there can we run from the police if they are try to stop us yes bruh lottery taxes come kar do not in my hand why blacklist good car let us enjoy I don't know first bullet maybe I'll think of it I'll check I think you are complaining because of pistols I'll do it sound pack without footsteps should be allowed since it doesn't affect anything and headshot sound does not even matter since it does the same damage no it just makes my job harder whenever I do PC checks okay so bear with me please
Okay, after this community meeting, you can reach out to us. Whoever is banned, your ban will be removed. That's all I can do. Do better. Don't break rules. Have a good night, guys. I'm sorry, Global API is down. I think Ben is not here, so play Among Us or some other game for some time, and then you can come back. Touch grass. Daily activity command force. Well, say hoga. It will help people so much. No, you can just visit. बस एक बार जाना है, press E and take a screenshot, and then एक बार जाके claim करना है. How hard is it? You know, a lot of people have issues. They need hostage. That's why they go to yeah. Rust is a good game. Okay, I think we are done. Thank you guys. Have a good day. I think we can delete this channel now as we have completed. If you have any other suggestion related businesses, we have something called State Cup Discord. You can join that. Post your suggestion over there. We'll read everything. Um, yeah, that's all. Thank you. I'm really sorry I was a little late because यहाँ पे electricity का थोड़ा issue है and I'm not feeling well. Thank you guys. Have a good day. Bye bye. रवि डीएम देख के जाना. मोटा हो गए मोटा हो गए हो कुछ टिप्स दे दो. Run every day. Okay. I'll go through the recall system again. I'll see what I can do, guys. Battle Royale events every Friday night. Wiki will be hosting it every Friday. We will be announcing it. Okay. Every Friday it will happen. Or every second Friday. Streak. If you lose your streak because of Abika downtime, just open 2.0 ticket. I'll fix it. Take care. Bye.
भाई साहब सही है, सही है। यस। अरे आरडी सर, अरे आज आरडी मेरे को वो सर। मिला था, एस्कोबार जात। पहचान था भाई, क्या बोला? ये कौन है? बोलता है मेरे को कुछ बिजनेस का बात मैसेज किया मेरे को। कुछ क्या किया था मैसेज? PRS लेने का सोच रहे हैं कि ये वो हम्म। मैसेज बोल कर गेम में जाके देखना पड़ेगा। PRS के बारे में बता रहा था, PRS किसके ग्रुप में हो, ये सब कुछ ऐसा कुछ। हाँ, मुझे मुझे मिला था ना कल भैरव। ठीक है, मैंने बोला हम लोग तो जा रहे हैं बिजनेस। अरे भाई साहब, मैं तेरा क्यों कितना ये बता मेरे को यात्रा पे। जिस लेवल का क्यू पे है ना हम, जिंदगी में कभी नहीं घुस पाएगा इसमें, समझा? इम्पॉसिबल है भाई इसमें घुसना, इम्पॉसिबल। आवाज नहीं आ रहा तेरा भाई। हेलो भाई, तेरा आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हाँ अब आ रहा। बोलो क्यों, कितना है तेरा? क्यों? क्यों? क्यों कितना है? 5% लोडिंग हुआ है। क्यू पोजीशन इज 56 ऑफ 58। डू यू थिंक वी कैन एंटर दिस? कुछ और है? कुछ और क्या है भाई, क्या करे? जिंदगी एमोंगस कितना, खेलने बोला था जिंदगी कितना खाली हो गया भाई। ना, मीटिंग में एमोंगस खेलने बोला था। कि जब तक आ नहीं जाता क्यों, हाँ। सर्वर अपनी होता तब तक अमंग अस खेले। हाँ, 2 जन में है। इम्पोस्टर कौन है पता है मेरे को। ग्लोबल वाला पे खेलना पड़ेगा, हाँ। ग्लोबल वाला पे खेलना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, प्राइवेट खेलेंगे हम लोग। फक। अब खोजना है इम्पोस्टर कौन है, मैं और तू खेलूंगा बस। यार कोई और मेरे गेम को बता मारे दी भाई। एंड, मैं तेरे को मारूंगा दी एंड, कोई और गेम या तो बता, मीटिंग देखते करेंगे। हैं। कोई और हाँ। गेम, कोई और गेम डाउनलोड करने लायक है क्या? कौन सा गेम डाउनलोड करने लायक है? वही तो पूछ रहा हूँ आ, क्या भाई। खेलेगा? वाइट लिस्ट अभी एप्लीकेशन $13.99 का हो गया है यात्रा का। ओ फक। भाई। $13.99। हाउ मच? 100, 1300, 1200-1300 रुपया। आ, इट्स अच्छा, टू तो कॉस्टली बैटमैन मैन। लिया था? हाँ हाँ, तुझे भेजा था ना। हाँ। अरे वो कर, यात्रा रोल पे में मसाला, अरे साला मसाला स्टोरी, यात्रा, यात्रा rp.com कर। वहाँ पे तेरे को डिस्कॉर्ड का सर्वर मिल जाएगा। क्या साइबरपंक पे डिस्काउंट चल रहा? मतलब 1200 रुपया क्या हुआ। क्या बोला, यात्रा? यात्रा rp.com। भाई साइबरपंक में डिस्काउंट चल रहा है। अरे नहीं हो पाएगा भाई, ये क्यू में घुस ही नहीं पाएगा। तेरा क्यू कितना है? मेरे को क्या पता मेरा क्यों कितना, मेरे को तो बता रहा है डिस्कॉर्ड नहीं, डिस्कॉर्ड में तो एडिट नहीं है इसलिए भाड़ में जा। अरे तू किया ही नहीं अभी तक, पाक। अरे मेरे को दो दो बैटमैन क्यों दिख रहा? सीजन 1, अच्छा सीजन 1 सीजन 2 दोनों है। ये कौन सा गेम है भाई?
भाई GTA 5 नॉर्मल वाला खेलता है, चल ऑनलाइन। GTA 5 ऑनलाइन खेलता है। अनेबल टू एक्सेप्ट इनवाइट। ओह शिट, व्हाई? ये कैसा गेम है बे? गांडू सर्वर में खेलने ही नहीं है मेरे को, हटा। क्लेम नाउ, व्हाट क्लेम नाउ? क्या क्लेम नाउ आया अभी? भाई स्टीम में कोई अच्छा गेम है क्या फ्री का? स्ट्रीम में फ्री का हम्म। देख, है तो शायद। स्ट्रीम में फ्री का तो पता नहीं, मेरे पास ये तो कुछ कुछ मोवा जैसा अच्छा लग रहा है खेल। एक गेम। कौन सा गेम? थंडर फ्लॉक स्टैंडर्ड वर्जन। तू मेरे को पीसी में मोबा खेलने मत बोल भाई, प्लीज। नहीं, मोबा जैसा लग रहा है, आरपीजी है, रोल प्लेइंग गेम। अरे मैं आरपीजी है। 2 इंच का सीढ़ी से कूद के मर जाऊंगा। 2 इंच का बहुत हाँ। ज्यादा है भाई। हाँ। कम से कम 1 इंच का होना चाहिए, 1 इंच या हाफ इंच, तब ना मजा आए। नहीं, मैं 2 इंच का से कूदूंगा, थोड़ा ज्यादा है। वो कर सकते हैं भाई। किक्का में किया, बट किक्का में तो वो हो रहा है। क्या? शंभू 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 भी वो खेल रहा GTA 5 ऑनलाइन, रेस रेस वाला। बात GTA 5 नॉर्मल वाला खेल के मजा नहीं है। ऑनलाइन वाला। हाँ, वो खेल के मजा नहीं, खेला हूँ। कुछ मजा नहीं आता, क्या उल्टा पुल्टा क्या चलता रहता पता नहीं, कुछ किसी को उसमें खिंचलियाँ समझ में नहीं। नहीं आता है, उसका मिशन सभी समझ में नहीं आता है। ऊपर से उसका करेंसी अलग है। मिलियंस में हर चीज है। हाँ हाँ भाई, बहुत महंगा उसमें हर चीज। और ऊपर से वो खरीदना पड़ता करेंसी। हाँ। जबकि है मेरे पास 5 मिलियन ना कितना है। अरे ये क्या बात हुआ? क्या हुआ? कैरी, क्या? राकाजोन, डैडी कूल, ये लोग क्या टीम बना रहा है क्या स्पोर्ट्स का? पबजी पीसी का भाई। पबजी पीसी? हाँ, पबजी कौन खेलता है? ये लोग टीम बना रहा है भाई। लगता है राकाजोन भी नहीं घुस पाया भाई। अपने सर्वर में नहीं हाँ, घुस पाया। ये क्या वस्तु है ये? इंसल्ट। अरे एक एक वो ऐसा है कॉल? जरा, क्या बोलता है, ई फुटबॉल का वो करता है। क्या? स्मार्ट असिस्ट फिल्टर इज कमिंग। कौन सा फिल्टर? स्मार्ट असिस्ट का फिल्टर क्या होता है? किधर है? अरे मेड नाशा करके एक ठू वो है, स्ट्रीमर है, यहाँ का नहीं है, कहीं बाहर का है, इंडियन हाँ, स्ट्रीमर नहीं है। मैडनेस का वीडियो देखता हूँ, पागला है वो। पगला है भाई। उसका स्ट्रिक देखा है गेम उसमें? कितना रैंक पे माल्टो। पीसी, पहले सिर्फ पीसी खेलता था। अभी फोन फोन में तो गांड फाड़ खेलता है भाई। पहले सिर्फ पीसी खेलता था माल्टा। सब तो यात्रा में ही दिख रहा है मेरे को, सोल सिटी में एक बंदा दिख रहा है। अच्छा, तेरे पास स्टीम में क्या क्या गेम है? स्टीम में चेक करना पड़ेगा, हाँ, स्टीम का पता नहीं मेरे खरीदा को, हुआ। देखना पड़ेगा। गेम स्टीम का हाँ, एपेक्स हाँ। लेजेंड्स, कॉल ऑफ ड्यूटी। ये कॉल ऑफ ड्यूटी कौन सा है बे? ब्लैक ऑप्स 7? अरे ये वो वाला कॉल ऑफ ड्यूटी है। अरे वो वाला मल्टीप्लेयर वो वाला, वाला? वारजोन वाला। वो बंद हो गया उसका सर्वर। लॉल। गेम तो है, क्या दिक्कत है? फिर काउंटर स्ट्राइक 2 है, ई फुटबॉल है, फार लाइट 84, 5M तो रनिंग है। ये राम, ये तो 18+ क्या गेम है। लाइट फार लाइट 84, है? मार्बल ये राइवल्स कौन है। सा गेम? अरे ये भी तेरा उसका सही है, थोड़ा थोड़ा पबजी जैसा ही। नहीं, पबजी तो एग्जैक्टली नहीं बोलेगा इसको, एपेक्स जैसे बोल सकता है। हाँ, एपेक्स टाइप का गेम है ये थोड़ा। अच्छा, तेरे पास लेफ्ट फॉर डेड है? क्या? लेफ्ट फॉर डेड? नहीं,
फ्री था क्या? ना मैं 50 रुपये में खरीदा था। लॉल नहीं। लेफ्ट 4 डेड 2 खेल पाता रे। अच्छा है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम्स में से है अभी तक का। बहुत पुराना है लेकिन बहुत मजा आता खेल के। हेंटाई सेक्शन भी है भाई इसमें कैटेगरीज में। हाँ है तो। लॉल। सिम्स 4 वीआर चैट। मेरे पास मेरे पास गेम्स था उस कैटेगरी का। मेरे पास भी है एक। मेरे पास एक है। रेनबो 6 7 मैं फ्री टू प्ले कम्युनिटी है। है। हाँ। क्या? रेनबो 6 सीज हाँ। फ्री टू प्ले दिखा रहा है क्यों? हाँ, वो बहुत दिन से फ्री टू प्ले है। अल्लाह। मैं खरीदा, मेरे को कैसा लग रहा है सोच, मैं खरीदा था उसको। डेल्टा फोर्स है। डेल्टा फोर्स हटा। और क्या वो क्या? पबजी का कॉपी ही है। ओवरवॉच। ब्लड स्ट्राइक लोड ही नहीं ले रहा। सुपरमार्केट टुगेदर ये क्या गेम है? सुपरमार्केट वाला गेम है। हाँ। अब मल्टीप्लेयर देखना है। मल्टीप्लेयर ही है ये अच्छा भी। तेरे पास स्ट्रीनोवा है? स्ट्रीनोवा? ना। अरे ना रे भाई, 51 GB कौन डाउनलोड करेगा अभी। स्ट्रीनोवा मस्त गेम था। एनिमे शूटिंग गेम है। शूटिंग गेम लेकिन एनिमे। एनिमे एनिमे वाला एनिमे कैरेक्टर वो सब है। कैरेक्टर जैसा है। ना मतलब आर्ट स्टाइल है, जापानीज आर्ट स्टाइल के साथ। ओह। वैम्पायर ब्लड हंट, ये क्या है? ये कब ऐड हुआ मेरे इसमें? मल्टीप्लेयर है? क्वेश्चन मार्क। पता नहीं। वो आया क्या कुछ नोटिफिकेशन आया लेकिन इस पे कुछ आया कुछ आया। नहीं आया। क्या आया पता नहीं। मैं डिस्कॉर्ड में कुछ आया मेरे को। तो देखो डिस्कॉर्ड पे कुछ आया। किधर से आया? अच्छा ना, इसका नहीं था, कोई और सर्वर का है। हाँ, वही तुम बोल रहा इसका नहीं था। इसका आने से तो मेरे को भी आएगा। रिंग ऑफ एलिजियम खेला है? नो। जब पबजी फ्री नहीं था तब हम लोग ये खेलते थे, क्योंकि एकदम पबजी जैसा था लेकिन अब तो फ्री। फ्री कर दिया पबजी भी बहन। हाँ तो उसको अभी तक कोई उसको क्या बोलेगा, ऑप्टिमाइज नहीं किया, लेकिन उस ये क्या घटिया है गेम को अभी तक स्ट्रीनोवा? कोई ऑप्टिमाइज नहीं किया। स्ट्रीनोवा हाँ यही तो। 51 GB। ओके। इसीलिए तो बोल रहा है, कौन डाउनलोड करेगा। अच्छा ये क्या है, डेस्कटॉप मेट है? सोलो लेवलिंग ओवर अराइज ओवर ड्राइव। भाई सब 2400 रुपया का गेम है। पागल है क्या? 2400? अरे किडिंग। ये क्या है, डेस्कटॉप मेट? हाँ। मेरे हाँ। पास एडेड था हाँ। ऑलरेडी। मेट? कौन क्या सा हुआ? मेट? कौन सा मेट? डेस्कटॉप मेट? ये कौन सा मेट का बात कर रहा तू? ये है क्या चीज, वो देख रहे हो, ऐप है शायद। क्या बोला डेस्कटॉप गेम तो मेट? लग नहीं रहा। हाँ वो नहीं मेट गेम ही थोड़ी तो लग करेगा रहा है। भाई डेस्कटॉप। ना, मेरे को गेम नहीं लग रहा। अच्छा नहीं ये गेम नहीं है कुछ और है। तू जो देखता तो सुपर किड लॉन्च कैरेक्टर कर। यूजिंग। अरे ये डेस्कटॉप में वो होता है शायद। Characters roam तो freely on the लॉन्च। desktop, sitting on the windows हाँ, and oh समझा। मजा आ गया ये तो। कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हैं क्या उसका? हम भी डाउनलोड कर हाँ बैठे हैं। कैरेक्टर तो चेंज कर सकता है। हाँ लेकिन कैरेक्टर चेंज कैसे करता है? आई डोंट नो। हाँ मिल गया कैरेक्टर चेंज का भी। लॉल। क्या क्या कैरेक्टर है?
यात्रा में घुस ही नहीं पा रहा मैं। घुसने से बोलना। नहीं घुस पाएगा। सुने मेरे को भी है। तो ये तो हर एक का ओवरलैप का ऊपर में आ जाएगी भाई, ऐसा मजा नहीं आएगा। तो कुछ बोलते ही नहीं है। बोलना चाहिए ना। मतलब हम लोग का जितना है तो उतना कम है। वॉल्यूम तो दे के रखा हुआ उसको। बोल कुछ। लोल। तो लैंग्वेज चेंज कर तो जापानीज कर तो क्या होता है। ना 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 ना, पूरा लैंग्वेज ही चेंज हो गया भाई। ये क्या सिटी है बे? लैंटिस सिटी वही 3, द सर्वर इज प्राइवेट। डिस्कॉर्ड पे जाता है तो क्या ए बाल। सर्वर इज नॉट रेडी। डिस्कॉर्ड का लिंक इज एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड। हर एक कैरेक्टर ही डीएलसी है। अलग अलग डील से डाउनलोड करना पड़ेगा। ओ पैसा लगेगा। वही तो देख रहा हूँ। हाँ, 880 रुपये पर कैरेक्टर है। बस किया। हेलो हेलो। कुछ बोलता क्यों नहीं है? मजा नहीं आ रहा। कौन? डेस्कटॉप मेट। बोलना भी चाहिए भाई, रिप्लाई करना चाहिए एटलीस्ट। अनइंस्टॉल कर दूंगा रे, कुछ बोल। अनइंस्टॉल तुम कर दिया। है, इतना जल्दी बोर हो गया तो। मजा ही नहीं है मेरे को। मैं सोचा था कुछ आवाज तो आया, कुछ आवाज नहीं आ रहा इसका। नथिंग। मे बी वो भी पेड होगा। उसको भी खरीदना पड़ता होगा मे बी। भाग यहाँ से। हम्म। भगा दिया। चल बाय बाय। क्या? अनइंस्टॉल कर दी। लॉल। मेटामॉर्फोस। भाई कुछ ये नहीं क्या है, गेम है भाई? कुछ अच्छा नहीं है भाई। ये क्या ऐड किया था? मेटामॉर्फोस। वो तेरी सोल लाइक गेम है। सोल लाइक गेम। हाँ। सिमुलेटर। डार्क सोल्स। तो अच्छा। डार्क सोल्स खेला है? हाँ, बहुत पहले, याद नहीं है हाँ, भाई। तो खेल। डार्क सोल किस में है? स्टीम पे? क्या नाम बोला? पीसी में डार्क। हाँ तो डार्क सोल्स खेल। क्या नाम है? डार्क सोल। अरे अभी जो गेम का बोल रहा था। अभी मेटामॉर्फोस। मेटाफोर, मेटामॉर्फोस। हाँ मेटामॉर्फोस। फोसिस। फोसिस नहीं, आए। मेटामॉर्फोस। एस तक, एस में रुक जा बस। मेटामॉर फोस। PHOS। एस तक रुक जा, अच्छा, ये फ्री टू प्ले है? आगे मत बढ़े। मेटामॉर्फोसिस सुनने से मेरे को अजीब बायोलॉजी याद लगता आता है। है। अरे हाँ, अच्छा गेम है बे।
साइज क्या है? 2 GB। हाँ। ये है ये ये क्या है? ये मजेदार चीज लग रहा है। स्पेलकास्टर क्रॉनिकल्स देखो। स्पेलकास्टर क्रॉनिकल। स्पेलकास्टर लिख। SPELL। हाँ। एस दे। हाँ। वही तो देख रहा है। गेम प्ले देखो तो जरा, उसके बाद। मैं पहले गेम प्ले देखूंगा। ये गांडू स्ट्रीम कर रहा है। हम लोग कॉन्वर्सेशन स्ट्रीम कर रही है गांडू। क्या है? क्वाइट हाई बोले तो? हाँ। हाँ। भाई गेम प्ले क्या दिखा पहले। भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा, स्पेल कास्टर्स वाला गेम तो मस्त है। हम्म। हाँ, खरीद। खरीद। हाँ। आया नहीं है, ये लोग का रहते ही है ना, हर दिन हर बार का आ रहा है, फिर आता नहीं है। आ रहा है बोल के फिर आता नहीं है। स्टीम को क्या हुआ? स्टीम रिस्टार्ट हो गया मेरे। पता नहीं। शायद इन लोगों का झाड़ू उधर। इनको मैं इन लोग तक पहुंचू कैसे मैं? बात कैसे करूँ इन लोग से? सर्वर के अंदर घुसा जल्दी। एपीएल लाओ। एपीएल लाओ। काला जादू, काला जादू बिना सर्वर के अंदर घुसे कैसे करेगा? काला जादू।
अच्छा हाँ, वो जो डीओजे था ना उसका नाम समथिंग काला था। हाँ भाई। ना 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 ना, कुछ तो था उससे पहले, लेकिन उसका सरनेम काला था। और है, ये कैसा सरनेम है भाई? क्या? अबे हुआ, लेकिन कब मतलब वो लोग कब देगा उसका पता नहीं। वही चीज तो असाइन कब करेगा वो, उसको उन लोगों को खुद नहीं पता। हंटिंग वाला तो मिल गया मेरे को। हंटिंग के लिए निकल गया था रे, हंटिंग लाइसेंस के लिए। वो क्या नाम है तेरा आने से पहले। हंटिंग लाइसेंस तो हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव हो गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा बात। रेड डेड रिडेम्पशन। रेड डेड रिडेम्पशन। अच्छा, रिडेम्पशन वो हिंदी में क्या बोलेंगे? वही तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। रेड डेड रिडेम्पशन को हिंदी में बोलता। लाल मरा हुआ पाप पाप मुक्ति। ना, लाल मौत पाप मुक्ति। अच्छा हाँ, डेड मतलब तो मौत। ए डेड मतलब मौत होता है। डेड, हाँ। डेड मतलब मरा हुआ होता है ना, मौत हाँ, मौत ही ठीक है। मौत, मरा हुआ, कुछ भी हो। अब मृत कॉन्टेक्स्ट मृत तो पता नहीं हम मृत लोग को। मृत बोलते हैं उसको, मृत। हाँ, मुर्दा। चले संस्कृत में चला जाए। डेड डेड लाल मुर्द मुर्दा, हाँ लाल लाल मुर्दा। लाल मुंडा। मुंडा क्या बोल दिया भाई, फक। लाल मुंडा। मुंडा। फक। रुक जा, पूरा डालते हैं ना। रेड रिडेम अरे रेड डेड रिडेम्पशन। Red Dead Redemption. ले, ये क्या हुआ? Red Dead Vimochan. विमोचन। अरे ये कर ही नहीं रहा हिंदी में प्रोनाउंस इसको। किसको दे रहा है? गूगल में। वो उसको मत दे, उसको मत दे, जीपीटी को दे भाई, जीपीटी। जी मैं नहीं मानता है। जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, तुम जीपीटी को दो भाई। ये आज सब हम उल्टा अपने पुल्टा लिए प्रॉम्प्ट देना, उसको दो। आज हम अपने लिए स्पेशलाइज्ड वो बनाया, क्या? पूरा एकदम मील के साथ खाना, मिल के साथ? मतलब डाइट प्लान। अच्छा, किसके साथ मिल के बना है? हाँ नहीं, जेमिनी से बनवाया, किसी का साथ मिल गया नहीं, जेमिनी से बनाया। वो गांडू बना के भी दे दिए। भाई मस्त बनाया है। हम सब कुछ डाला अपना, बीएमआई वीएमआई एज वेज, वेट हाइट, रिसेंट क्या है, सब कुछ डालने के बाद फिर जाके वो डाइट प्लान हाँ, मेरे को दिया, डाइट प्लान प्लस वर्कआउट रूटीन भी दे दिया कि कौन सा दिन पे कौन सा करना चाहिए। कर रहा है। आज ही तो किया है भाई, कल से फॉलो करूंगा। तो आज ही की याद से फॉलो करता। ए राम, हेड क्यों लिख दिया, हिंदी बोलना चाहिए था तो हेड लिख दिया मैंने। क्या तेरे को हेड चाहिए? गलत हो गया, गलत। क्या तेरे को हेड देने का मन है? नोप। ये सब मत कर भाई।
शुको को लेके आता है, पेगाचूस को। नहीं 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 In Hindi, वो नहीं Red Dead चाहिए। Redemption is spelled phonetically based on its English pronunciation. Here is how you write it in the Devanagari script. Reda Dita Ridempasana. हाँ रहने दे भाई, हो गया, समझ गया। चल लीग ऑफ लेजेंड्स खेलते हैं। डाउनलोड ही नहीं है। हैं? लीग ऑफ लेजेंड्स ही खेलूंगा अब मैं। वही खेलेगा तो अब से, हम्म, और कुछ नहीं खेलेगा तो? नहीं। पक्का तो? हाँ सोच ले, देयर साथ इज में नो डोटा गोइंग, 2 खेलूंगा। नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस। नहीं भाई मेरे को गेम खेलना छोड़ना नहीं है। आ गए औकात पे। भाई 2 दिन खेलूंगा या तो 1 हफ्ता खेलूंगा, स्काउट उसके नया बाद तू गाड़ी ले मेरे को रहा है। पागल खाने में देखेगा। क्या बोला? समझा? 2 दिन, 2 दिन? 2 दिन से 1 हफ्ता खेलूंगा, उसके बाद तू मेरे को पागल खाने देखेगा। कौन सा? वो अगर मैं लीग ऑफ लेजेंड्स एक हफ्ता से ज्यादा खेल रहा था। हाँ ये बात तो है, पागल तो हो ही जाएगा। अब मैं पागल खाने में ही दिखूंगा उसके बाद। भाई नेमार को बुला लिया वर्ल्ड कप के लिए, हाँ नेमार को बुला लिया वर्ल्ड कप के लिए। नेमार ए को। ए भाई, वो क्या बोला था, शॉर्ट्स में वो स्ट्रीम कैसे करता है? यूट्यूब शॉर्ट्स में स्ट्रीम हाँ कैसे वो करता मेरे है? को भी नहीं पता, मेरे को भी जानना है वो बकचोदी कैसे करते हो वो। भाई उसमें ज्यादा अच्छा रीच मिलता, हम देखा। अबे रीच अच्छा मिलेगा ना, क्योंकि स्क्रॉल करता रहता लोग हाँ रैंडमली। वही रैंडमली स्क्रॉल कर रहा है आगे बीच में, देख लिया। तू अगर ऐसे ये सब गेम अगर वैसे वैसे स्ट्रीम करेगा तब तो होगी। पूरा का पूरा तो विंडो ही नहीं दिखेगा। वो तो नहीं दिखेगा, दोनों में करेगा। ओवरले से उससे दिखेगा क्या? है डेड आइलैंड 2 है मेरे पास। नाइस। तेरे पास है? नो, एपिक में? नहीं है। अच्छा हाँ तेरे को लेने बोला था तो लिया नहीं तो। डीवीडी है? ओ शिट, तेरे पास शिट डीवीडी शिट है? शिट। ए ना 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 ना। डेड बाय डेलाइट भी नहीं है? नो। तेरे को पहले लेने बोलता था तो लेता नहीं था। मेरे पास कंट्रोल भी है पता है। स्ट्रीम यूआरएल अगर दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना शायद? हाँ दिक्कत है। वो अगर दिख गया तो कोई भी तेरा की लेके यूज कर सकता है ना। की कहाँ से मिलेगा भाई? की नहीं दिखता है वहां पे, की तो कहीं और दिखता है अब तो। कोई वेबसाइट वेबसाइट मत दिखाना। कौन सा पूरा का वेबसाइट? पूरा मेरा वेबसाइट? वेबसाइट्स का एड्रेस मत दिखाना पूरा। वो तो नहीं दिखाया, वो तो पीछे और भी रहता है ना। हाँ वो सब मिलने से लफड़ा है। आज ही हम स्ट्रीम की चेंज कर दूंगा, रीसेट मार दूंगा। मनी हाइस्ट नया आ रहा है क्या? अब 5 में देखता था, कुछ और गेम वेम है क्या कुछ? फॉल गाइस खेलेगा? क्या? फॉल गाइस? ए बाल, गेंशिन इम्पैक्ट खेलते थे। बाल फॉल गाइस खेल सकता है, उसमें तो और भी गेम रहता है ना शायद। तो ये आया एपीआई? ना ना, पागल है क्या अभी? एक बंदे का नाम है माई सेल्फ दरिंदा परिंदा। As soon as global API come online, we'll announce it. Okay.
कहाँ लिखा है ये? किधर लिखा है? हाँ जनरल चैट्स में। तो लेके आओ ना। भाई जनरल चैट किधर है? तो अरे जनरल स्ट्रीमर लाउंज के नीचे देख। नीचे बहुत नीचे हो, स्क्रॉल कर भाई। मानना पड़ेगा भाई, ये सर्वर को मेंटेन करने में जिसका जो भी मेंटेन करता होगा ना, ये डिस्कॉर्ड वाला सर्वर, उसका गांड जो फटता होगा। सोच भाई कितना जनरल लो किधर है? भाई, सब बकचोदी कर रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। स्ट्रीम लाउंज। हाँ वहाँ पे तुम अपना वो डाल सकते हो, स्ट्रीमर का वो। वेलकम बैक अबे टू नहीं, स्ट्रीम लेगेसी मैं स्ट्रीमर यहाँ तक आ गया, मूव टू द वो टॉप इवेंट्स नंबर तक आ ऑन गया। लिस्ट में। क्या? मैं वो इवेंट्स तक आ गया, मेरे को कुछ दिखा नहीं ऐसा। अरे इतना नीचे क्यों चला गया भाई, ऊपर जा। हाँ। एकदम ऊपर जा पहले, है एकदम ऊपर जा, है फिर धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल कर। अच्छा इसमें लेगेसी स्ट्रीमर के लिए यहाँ पे वो डालना पड़ता है तेरे को, एप्लीकेशन डालना पड़ता है लेगेसी स्ट्रीमर बनने के। कम्युनिटी मीटिंग दिखा, अनाउंसमेंट्स दिखा, उसके नीचे जाता जा, धीरे धीरे जा, फिर देख स्ट्रीमर इन्फो आएगा, उसके नीचे में देख जनरल चैट्स, उसमें लिखा हुआ है। भाई स्ट्रीमर का तो हम भरा था, बट कुछ हुआ नहीं। हायर अप 3 4। दरिंदा परिंदा। हेलो हेलो हेलो, चैनल लिंक कहाँ से निकलता है? अच्छा मिल गया चैनल लिंक। शेयर चैनल, चैनल लाइक। हम ये दूसरा बार डाल, अरे ये क्या हो गया? ग्लोबल एपीआई आ गया, आ गया, आ गया, बल्ले 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 बल्ले। आजा आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। सुना? क्या? ग्लोबल एपीआई आ गया, किधर? आ गया, मैसेज आ गया। किसका है? ग्लोबल एपीआई आ गया अब। ऑनलाइन अबे ऑनलाइन किसका? ऑनलाइन हो गया। लेगेसी कौन? लेगेसी 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 लेगेसी। ये कौन है? पहले 5M खोलता है, फॉर्म तो भरता रहेगा। अरे लाइसेंस आईडी, लाइसेंस आईडी। अच्छा ओए, तो हंटिंग लाइसेंस उठाना कहाँ से पड़ता है रे? आई डोंट नो। क्यों? ये क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। तू मेरे से पहले सर्वर में, तेरे को जानना पड़ेगा। नो इट इज नॉट, इट इज, आई क्या डोंट बोल नो, रहा? इट इज नॉट व्हाट इट बोलना क्या इज। चाहता है? भाई 19 लोग है बोलना। सर्वर में, तुम सोच रहे हैं 19 लोग, किसी को पता नहीं है। जल्दी घुस, नहीं तो ये भी प्रायोरिटी लिस्ट में चला जाएगा तू फिर से। मैं तेरे से आगे लाइन में रहूंगा बैंड अभी, अगर घुसा तो। बैंड चोद हो क्योंकि मैं जाएगा मैसेज देखा और इधर क्लिक किया। साला। हरामी, तेरा बोला भी बोलने से नहीं, पहले। बोला भी नहीं साला चूतिया। हम कहाँ उठूंगा? मेरे को होटल में उठना पड़ेगा। मेरा गेम लोड होना भी शुरू हो गया। घुस गया क्या गेम के अंदर? Fuck. टू फास्ट ब्रो, टू फास्ट, यू टू फास्ट। मेरा गेम खुला ही हुआ था भाई। यू टू फास्ट, मत- मतलब खुला ही 5M हुआ खोल के था। बैठा हुआ था।
साइलेंट खोल के ही बैठा हुआ है मैं मेरे को लगा सर्वर ही का था। वो उसमें। बस और मैसेज आने का देरी था। हर कुछ मिनट में ट्राई कर रहा था घुसने का। शाम। फिर से आज लेट नाइट सोएगा, फिर सुबह उठ नहीं पाएगा ले जल्दी से। ज्यादा देर नहीं खेलेगा, 1 बजे तक खेलेगा फिर सो जाऊंगा। कौन मैसेज किया ये? कौन सा मैसेज? कौन मैसेज है? कौन सा मैसेज? ये जो पढ़ा तो अभी। पढ़ा नहीं, हम बोला तेरे को कि 11 तो बज रहा है भाई, ज्यादा देर खेल नहीं पाएगा, वो बोला। क्या खेल रहा है? हम लोग दूसरा लाइफ में जा रहा है भाई। हाँ वही, उस रात में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा, सोने जाना है मेरे को। मैं उसी लाइफ में रहना है मेरे को। चला जाएगा, माइनिंग करता रहना सारा दिन। पर परमानेंट शिफ्ट करवा दो। माइनिंग करता रहना वो। फटता रहना, माइनिंग करता रहना। 70,000 रुपए है। अभी तो और माल बेचना बाकी है। और माल बेचना तो बाकी है ही। माल तो बेचे ही नहीं अभी तक। माल बेचने के बाद तो मजे आएंगे। आए इधर आए, गेम में आए, मैंने सिटी में आए। एक सेकंड दोस्तों, पहले ये कर लेते हैं। कहाँ मर गया? जिंदा है? जिंदा है क्या? नहीं नहीं है, भूत बोल रहा क्या? डायरेक्ट का भूत। हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल क्या कर रहा है? वहीं वेकअप। हाँ, कल गिर गया था मर गया था? सोने से पहले। मर गया था? छत से। पाक। कौन सा हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? सिटी का दूसरा वाला। सिटी का दूसरा वाला मतलब? अच्छा, वो जहाँ पे क्रिमिनल लोग को लेके जाता है, लॉल। और क्रिमिनल हॉस्पिटल है मोस्टली। मैं हूँ। मेरा इनगॉट का हालत बहुत खराब है। अच्छा ओए, क्राइम वाला वो कहाँ देखते? चल तो आज देख। हाँ, हम पहले ज़ॉम्बी पिल करके आता है। मेरा ज़ॉम्बी पिल फिर से एक्सपायर हो जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा मेरा। हमसे वहाँ है पलिटो। तुम मेरे को बिल करेगा? एक बचा हुआ है, वो करके आता है। एक बचा हुआ है, करके आता है। तो करके उसके बाद आएगा? हाँ हाँ, 2 मिनट लगेगा भाई, करने में कितना टाइम लगता है? मैं उतना देर क्या करूँ? तो पलिटो आ, माइनिंग डायरेक्ट यहीं से माइनिंग शुरू कर देगा, यहीं से एकदम आते साथ ही माइनिंग आए।
जल्दी आ जल्दी। तो भाई सरकार को बोल के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है एफपीएस का। कुछ तो है गड़बड़। बोला तो था ठीक हो गया। कहाँ घंटा ठीक हुआ एफपीएस? कहाँ ठीक हुआ? अभी भी मेरा गेम चौपी चौपी फील है, जबकि अभी तो पब्लिक भी नहीं है इतना। 61 लोग है बस। ओ भाई वो करता है, रुक जा। सिटी आना ही पड़ेगा मेरे को, सिटी आना ही पड़ेगा। मिशन देखना पड़ेगा ना, भूल ही गया था। बाजार का मिशन आज तो कर ही नहीं पाएगा लगता है। उल्टा सीधा मिशन होगा तो गांड फट जाएगा भाई करते करते। स्कूबा स्कूबा मत दे दियो बस। शॉर्टकट बेबी, लेट्स गो। अरे 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 अरे, गलत एक्शन गलत एक्शन कर। भाई लाल डब्बा में देखिए तो एक बार ठीक ठाक दिख रहा कि नहीं। देखा क्या? पीडीएम चले गया, गाड़ी देख के आता है अगर आया होगा तो। ट्रकिंग से